Hello students, very good morning to all of you. How are you all? I think you are very fine at your home, even also safe with your parents. So dear students, today we are going to revise our chapter number 4, that is my food habit. Before that, we have done our revision of lesson number 1, lesson number 2 and lesson number 3. Okay students, so now I am going to teach you about my food habits. As we have done this chapter already in the previous classes, okay, so in the previous videos हम लोगों ने ये chapters complete कर लिए हैं, but आज हम इसका revision करेंगे for the examination, upcoming examination. Okay, so here we have in the page number 13, so all of you open your book and open the page number 1313. My food habits. So my food habits, what are your food habits? Before starting this, there is one starter activity which we have done already. We have to circle the healthy food items and circle. We have to tick the tick mark in the healthy food items and circle the junk food. So in this box we have 3 junk foods, that is pizza, burger and ice cream. So इन 3 चीज़ों को आपको सर्कल करना है. बाकी सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी हेल्दी होती है. So we will tick the right mark. After that, let's see. Do you know why we need food? क्या आपको पता है हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? We need food to get energy to work, think and play. यानी हमें एनर्जी की जरूरत होती है सोचने के लिए, खेलने के लिए या कोई भी एनीथिंग वर्क करने के लिए. ओके, सो वी वांट एनर्जी इन आवर बॉडी, सो फूड गिव्स अस एनर्जी. देन फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, you know, when you are a small baby, then you become a large and then you become an adult. इस तरीके से आप धीरे धीरे बढ़ते जाते हो. तो it is a growth of our body. So हमारी बॉडी की ग्रोथ कैसे होती है? Through some food items. And for the good health, हम हमेशा healthy and fit and fine कैसे रहते हैं? When we eat lots of fruits and vegetables and even also different types of food items. Okay, so food, we need food to get energy for the growth of body and for good health. Now we have different ways to eat our food. You know, there are different food items which help us to grow, to get energy and to be healthy. So how we grow, हम कैसे grow होते हैं? By eating these awesome items. Here you can see the first one line. In this there are some examples: milk, egg, fish and dal. Dal means pulses. Okay, different types of dal होती है, उन सबको हम पका के खाते हैं. So milk, egg, fish and dal help us to grow. हमें वो help करते हैं grow होने के लिए, बड़ा होने के लिए. फिर हमें एनर्जी कौन से फूड आइटम से मिलती है? So here are food items in the next row, that is rice, chapati, bread and butter. हमें rice खाना चाहिए, चपाती तो खाना ही चाहिए, bread and butter, इन सब से हमें क्या मिलती है? Energy. Now turn the page. How we become healthy? हम हमेशा fit and fine और healthy कैसे रहते हैं? So we have to eat fruits and vegetables, because fruits and vegetables are most important part of the food item. And food for health, we need food for health. No, we have to eat food of fruits and vegetables, different types of vegetables and different types of fruits. So dear students, as I have given you have to write the homework: fruits and vegetables name, 10 names of fruits, 10 names of vegetables. I hope आप सभी लोगों ने किया होगा. So you have to learn the all food items and fruits and vegetables name. All these 3 groups of food are most important to us. We must eat from all these groups every day. यानी जितने मैंने आपको food items बताए, यानी grow करने के food items, energy के food items और healthy रहने के food items, हमें इन तीनों food items को daily खाना चाहिए. Meal time, अब हम कब खाना खाते हैं? We eat in the morning, in the afternoon and at night. So meals is the food that we eat in a certain time. As I have told you, हमारी एक daily routine होती है जिसे हम particular time पे
पर्टिकुलर टाइम पे हम हर चीज को फॉलो करते हैं। सिमिलरली हमारे खाने खाने का भी एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। इन दिस वे वी कैन मेंटेन आवर डेली रूटीन, लाइक मॉर्निंग हम कितने बजे उठते हैं, कितने बजे हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करते हैं। इन दिस वे वी हैव टू मेंटेन आवर डेली रूटीन। सो वी हैव 3 meals in a day. We have 3 meals in a day. The first one is breakfast in the morning, the second one is lunch in the afternoon, and third one is dinner at night. Okay, in this way we have to eat. So मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट जो होता है वो 10 o'clock के आसपास कर लेना चाहिए। आफ्टर दैट 1 to 2 o'clock को हमें लंच करना चाहिए, एंड डिनर वी हैव टू डू एट 8 to 9 o'clock. आफ्टर दैट we don't want to eat, है ना, we drink milk and sleep. Where does food come from? अब इसके बाद आता है कि फूड तो हम खाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमारे लिए लेके आते हैं, हमारी मम्मा हमने उसको डिलीशियस बना के खिलाती है, लेकिन ये फूड आइटम्स आते कहाँ से हैं? Where does it come from? आप बोलोगे मैम हमारे पापा तो मार्केट से लेके आते हैं, है ना, लेकिन मार्केट में फूड आइटम्स कहाँ से आते हैं? So we get food items from plants and animals. हमें plants और animals से food items provide होते हैं. So we get food from plants and animals. So plant gives us cereals, pulses, fruits and vegetables. Cereals means rice, wheat, बाजरा. जैसे wheat से हमारी रोटी बनती है ना, गेहूं को पिसवा के रोटी बनाते हैं, आटा बनाते हैं. तो cereals are those. Pulses मतलब होते हैं दाल, different types of दाल, मूंग, चना, है ना, and fruits and vegetables, you know very well. So these are the food items which we get from the plants. And what we get from the animals? We get from the milk, hen यानी eggs, hen हमें eggs देती है, meat and honey. Okay, so these are the items which we get from the animals. So after that, here are milk products. Milk products are those products which made by milk. यानी दूध से, मिल्क से बनने वाले चीजों को मिल्क प्रोडक्ट्स कहा जाता है. So here you can see milk क्या क्या बनाता है. Butter is made by milk. Curd मतलब दही. Cheese is also made by milk. पनीर is also made by milk. And cream आप खाते हो ना, केक में लगी हुई रहती है cream. This is also made by milk. So these are 5 food items, 5 milk products which are made by milk. So in this way we have recap all the chapter. So what we learned from this chapter? We learned we need food to get energy, to grow and for good health. Different foods help us in a different ways. Meal is the food that we eat at a certain time, है ना, हर टाइम पे जो हम खाना खाते हैं उसे कहा जाता है meal, M-E-A-L, meal. So we do 3 meals in a day, that is breakfast in the morning, lunch in the afternoon and dinner at night. We get food from plants and animals. We learn कि हमारे food items जो हैं वो कहाँ से मिलते हैं? Plants and animals. So we get cereals, pulses, fruits and vegetables from the plants, and we get milk, eggs, meat and honey from the animals. And also we have learned about milk products. So there are 5 milk products which made by milk. So first one, butter, curd, cheese and paneer, and the last one is paneer and butter and cream. So in this way we have learned this chapter, food for health. I hope आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए. So जंक फूड जो रहता है वो जंक फूड जो हमें कुछ भी हेल्प नहीं करते, ना ग्रो होने के लिए, ना एनर्जी देने के लिए, जैसे हो गया मैगी, पिज्जा, बर्गर. बट आई नो आप सभी लोगों को ये चीजें खाना बहुत पसंद है, बट आप लोगों को ये चीजें काफी लिमिट में खानी चाहिए. एंड इफ यू हैव टू इग्नोर दैट, सो यू हैव टू. अगर आप उसे इग्नोर कर सकते हो तो आप इग्नोर करिए, अदरवाइज आप खाइए बट इन द गैप ऑफ मंथ्स, है ना, कुछ महीनों के गैप्स में आप खाइए. अदरवाइज यू शुड ईट
fruits, vegetable, 3 different groups. मैंने पढ़ाया आपको 3 different groups. सम फूड आइटम से हमें एनर्जी मिलती है, कुछ फूड आइटम्स हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करते हैं और कुछ आइटम्स हमें हेल्दी रखते हैं. सो इन तीनों आइटम्स को हमें ईट करना चाहिए एवरी डे इन आवर डे टू डे मील. Okay, after that dear students, we have completed the exercise page number given on page number on the 16 given है ना. ये exercise हमने कर लिया था. Tick the correct answers, then choose the complete the sentences, and then here we have name the name and 2 good food habits, and write the names of 3 things which we get from plants and animals. In this way we have completed our exercise. I hope आप सभी लोगों ने ये exercise अच्छे से complete की होगी. Completed? Okay, after that this slogan is written here: food taste better when eaten with family. This is the slogan, है ना. जब हम फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते हैं सो फूड जो है वो हमें और ज़्यादा टेस्टी लगता है. सो यू हैव टू कलर दिस स्लोगन. दिस इज द होमवर्क फॉर यू. एंड द लास्ट वन एक्टिविटी, देयर इज that are cooked before eating and that are not cooked before eating. Not cooked का मतलब होता है we can eat it raw. मतलब हम कच्चा भी ऐसे आइटम्स खा सकते हैं, like fruits है ना. फ्रूट्स खा सकते हैं, एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंज, एंड वी कैन ईट टोमेटो ऑल्सो. एंड जो हम कच्चा नहीं खा सकते दैट इज अ ब्रिंजल एंड potatoes. I have made it the pictures and write their names. So in this way we have completed this chapter. I hope you all have understood about this chapter, and we have done today revision of this chapter. So dear students, after that if you have any query related to this chapter you can ask me and you can message me on my WhatsApp number. After that dear student, what you have to do, you have to learn all the exercises, learn the spellings also of the milk products and different spellings which we get from the things we get from plants and animals. सबकी spellings के साथ आपको learn करना है for your examinations. Okay, so next month आपकी exam है जिसमें आपको 4 chapters आने वाले हैं EVS में. Chapter number 1, chapter number 2, chapter number 3 and chapter number 4. I hope आप सभी लोगों को चारों chapters काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे and आपने complete किया होगा. Then only if you have any query, contact to me. Okay students, so tomorrow we will meet again and continue our class. So bye dear students, take care, have a nice day and learn question and answers.